Hello, good morning students. It's Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher. So students, in this video we are going to study about dissolution of a partnership firm with the help of question number 32 and 33 from the DK Goel book. So first of all, I'm going to show you question number 32. I will explain this. After this, we will move forward for the question number 33. So see what is question. Question is give journal entry in each of the following alternative cases. First is realization expense paid by X on the behalf of firm. X के behalf पे who paid firm. ठीक है, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस पेड हुई है. एक्सपेंसेस व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड देन वेर दीज आर रिकॉर्डेड इन रियलाइजेशन इन क्रेडिट साइड. भी हम लोग सोचो असेट्स को पहले डेबिट ट्रांसफर करते थे, लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड. आफ्टर दैट वेन एवर वी आर सेलिंग असेट्स दैट वी वर रिकॉर्डिंग इन क्रेडिट साइड. हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते थे ना, बाई बैंक सारे एसेट्स रियलाइज. लाइबिलिटी का पेमेंट होता था तो टू बैंक करके डेबिट साइड में लिखते थे. वेन एवर वी आर राइटिंग एंट्री इन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन दैट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड एंड टू. अगर फर्म पे कर रही होती तो टू बैंक लिख देते थे. अगर पार्टनर पे कर रहा होता तो क्या लिखते थे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो द सेम वे firm is paid by the firm, expenses are paid by the firm but on the behalf of X. So we have to write journal entry realization account debit to X capital account. ठीक है, अमाउंट नहीं आएगा, नोट कर लीजिए. सेकेंड ट्रांजेक्शन इज रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई फर्म 1000. However, the expenses were to be borne by X for which he has to given 5% commission on net cash realized from dissolution. Cash realized was 2 lakh and liability paid for that 40,000. तो देखिए 2 लाख माइनस 40 तो नेट कैश रियलाइज कितना हुआ? 140 160 एंड 160 का आप 5% देखेंगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? हाउ मच इज इट? कितना हो जाएगा? 16 5 ज़ा 80 8000. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? रियलाइजेशन पेड बाई फर्म 1000. तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या बन जाएगी? और वो किसको मिलेगा? द एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाई एक्स. तो एक्स बोर्न करेगा ना, तो यहाँ रियलाइजेशन से तो कोई मतलब नहीं है. तो फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके, फर्म से पैसा किसके पास आ रहा है? एक्स के पास आ रहा है. दैट इज वाई एक्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. ओके, एट सेकेंड स्टेप नाउ व्हाट वी हैव टू डू? नाउ दिस 2 लाख इज रियलाइज्ड, कैश रियलाइज्ड फ्रॉम असेट्स. तो असेट से जब रियलाइज हुआ तो दिस यू विल रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन बाई बैंक, सो दैट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन यू हैव टू राइट 2 लाख. ओके, ये तो आती होगी ना एंट्री. एंड वेन एवर लाइबिलिटी इज पेड ऑफ 40,000 दिस इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन टू बैंक. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक you have to write. Okay, after that 8,000 is paid by firm to X. ठीक है, for his commission X for which he has to be given commission of 5%. So this is the actual expense related to the firm. Okay, so here you have to write realization account debit to X capital account 8,000. Okay, so this will be the entry. After that general reserve appeared in the books of the firm was 20,000. So this will be divided among all partners in their old ratio. The general reserve account debit to partners capital account in their profit sharing ratio, we will divide this. Okay, after that sundry creditor amounted to 15,000. These were to be paid at the 2% discount. So 2% will be 300. So 14,700 realization account debit to bank entry will be like this. Okay, so see the solution. अगर आपको वहाँ समझ में ना ही हो तो आप यहाँ से एंट्रियाँ देख के नोट कर सकते हैं. फर्स्ट एंट्री मैंने क्या बोली थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट. ओके, सेकंड इज एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक बिकॉज एक्सपेंस वाज पेड बाय द फर्म on the behalf of X. So here X will get this money, so that is why 1,000 debit to bank. Okay, after that second part will be 2 lakh was realized from assets. So bank debit to relation. 40,000 was paid for liability, to relation account debit to bank. I told all entry, I have explained already all these entries. Again I am explaining. Only आप लोग को you have to note down all entries. Okay, these entries. Now next relation account debit to X capital account 8,000. Okay, this is the commission. ठीक है, which is payable to X. Okay,
After that, general reserve is debit to partners capital account 20,000, and after that, at last, relation account debit to bank. This is the payment to creditors. Okay. Now see question number 33. See, question 33 is also similar. Realization expenses paid 3,000. So you know very well expenses paid recorded in the debit side of realization. So relation debit to bank. Realization expense paid by firm 2,000 of Mr. X on the one of the partner has to bear these expenses. Okay. Why one of the partner took over a machine of 20,000? So I'm explaining all these entries. First, let me explain all these. Z1 partner took over creditor of 30,000 for how much? 20,000. So this will be recorded as 20,000. And one partner has given loan to firm 10,000. So loan debit to bank you have to write, and 50,000 will be divided among partner in their holder ratio. So see now entries. What are the entries? The first entry will be second. First तो मैंने बता देते ना, relation account debit to bank. First entry was this. रिलेशन एक्सपेंस पेड 3,000. तो यू कैन राइट रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. नोट कर दीजिए, नोट डाउन दिस एंट्री, relation account debit to bank. Okay, I'm starting in the solution from second entry. Second entry will be X capital account debit to bank account. Okay, payment of relation expenses by the firm but on the behalf of X. Whenever payment is based on the behalf of any partner, in that case you have to debit the particular partner. Okay, machine was taken over by X, that is why Y capital account debit to relation. You know very well, whenever assets are realized we record in credit side, but if any partner take, then again we have to write in, we are recording in credit side, but we were writing the partner's name. So that is why here Y capital debit to realization. Okay, next entry is relation account debit to Z's capital because creditors of 30,000 taken over by Z for 20,000. ठीक है, अब 30,000 के क्रेडिटर 20,000 में किसने लिए थे? जेड ने पेमेंट किया उसका. सो दैट इज वाई वी हैव रिटन हियर 20,000. एंड लोन पेड, एस लोन वाज पेड बाय टू हिम, तो ए 10,000 डेबिट टू बैंक. दिस वाज पेमेंट टू ए. एंड देन आफ्टर दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज दिस वाज अ डेबिट बैलेंस appeared in the books of the firm. Okay, so you can note down these entries. Okay, I pause this video and note all the entries. Okay, I hope you have got it both the questions. If any kind of problem is there, mention your problem in the comment section and solve remaining question of this chapter. This chapter is going to complete within 2 or 3 questions are left. Okay, so all the questions till 40 you have to solve by yourself. I will upload videos which are problematic by some students, okay, in which students will face problem. I will make video for that. Thank you student for watching this video. Bye bye, take care.